Good morning, everyone. Myself, Dr. Mohammad Irfan Ahmed. Today, I am discussing about the subject that is electrical testing and commissioning. So, in this subjects, basically, we have discussed about the what are the safety precautions has been taken, and that has been studied in the Polytechnic Electrical and Electronics Engineering 4 semesters. So I have discussed about that. That has been I am Dr. MD Irfan Ahmed, Assistant Professor in Electrical and Electronics Engineering Department from Arka Jain University, Jharkhand. So this is the particulars the subject has been covered in the following syllabus has been discussed in this particular, that is the electrical safety and insulations in unit 1, what are the safety precautions has been taken, and in the unit 2, that is the installation and erection process, what are the selection and erection process has been done, and the installation. So it will be depending on the how the foundation has been done, then installation and the erection process, then testing and commissioning, whatever the concept of testing, what are the objective of testing, routine test, type test. So we have discussed this one by one, and then after that troubleshooting plans and the maintenance, and this is the particular units we have covered in this particular subjects. So the textbooks and reference books, you can see that mainly textbooks are covered in the publisher, that is Khanna and SK Kataria and Sons publishers, and the reference book you can refer from that McGraw Hill publications or the ASHAM, that is Generation of Electrical Energy from B.R. Gupta. So in the unit 1, we have discusses about the particular electrical safety and insulation process. So you before we have discussing about, you should know or you should aware about that particular important terminology used in the particular for the safety purpose. The term safety is defined as the what are the meaning. The term is safety basically being what is being the safe and not being the dangers or in the danger, in the danger. So the safety for the practices we have uh, following the uh, following the process, what are the safety practices in the general life. So first we have understand, place yourself in the secure position to avoid the slipping, stumbling or moving backward against the live conductors. So to avoid that, and do not rely for the protection upon a case assume that the exercised by others. Suppose in the live conductor one of the person are doing work and you can near about them, then that will be the dangerous for that. So for that situation you should maintain a distance from that. Okay, so this is the particular case you have to know about that. The next is the, you should know about the notice board, that is the name dangerous notice and plates and dangerous flags, warning boards and signals. So you should aware about them and warn the other also, you should aware them. Then you should the others to warn the others to aware about that, and we distance maintain the distance from the live conductors. Then we have discussed the hazards. So hazards is the arises in the randomly or without any planning. Okay, so electrical systems is quite possible with that faults may develop the haphazardly causing the disturbance in the systems. So that will be the causes of the hazards. So in this particular hazard, generation of heat and the temperature has been increases near about the fault, and the resulting the fire hazard from the electricity. So that is the term. And the accident, next accident, the term is accident. The event happens unexpectedly and cause the damage or injury of that particular situation. So that is called the accidents. And the major accident hazards that has been coming, the person is coming with contact with the machinery or equipment or apparatus and gets the severe shocks and near the live conductors, and which may cause the death of that particular persons in the coming contact. So that is the major accidents. And the responsibility means, the meaning of responsibility is being responsible or accountable. It is the responsibility that in charge or engineers to see what are the what are that happens in the plant operation goes on smoothly has been done. The next is the authority, the person who has the power to give the orders and make the orders to obey the same of the call is the authority. And the next, accountability means it is expected from the person in charge or certain work to give the explanation if something goes wrong or something goes work is not completed in the specified time. So for that reason, it is accountability of the particular officer
to do the work within the specified time. Next is the monitoring, is the process in which the continuous observations of record or test of operation of a machine or equipment are carried out. So particular, this is the monitoring process has been done. Okay, now the most important, that is the IE Act and the statutory regulations for safety of a persons and equipments working with the electrical installation. So IE is basically representing that Indian Electricity Act. So according to the Indian Electricity Act, we have followed the safety rules and regulations for a particular installation of any equipment that has been working. So we have followed that the no person shall carry or the attempt any work on live मेंस और apparatus. कोई भी persons आपके particular जो है वो अगर attempt कर रहे हैं any work on the live main apparatus, so you should have the notice or you should have the particular permit to work under that direct supervision of the competent authorities. So live wire में अगर आपको work करना है, so you have a permit, then you can work on that particular work with the particular permit letters. Okay. Second is that the person in charge shall explain the nature or duration of the work. So जो भी particular person in charge है वो define करे कि what are the work and what are the nature and what are the duration of the work and carried out should be completed with the permit issuing authorities. So आपको जो भी work दिया गया है permit issuing authority के through deadlines दिया गया है, you should complete before that. Okay, so that though the other person will not hampered through that situation, so person in charge will ensure that the work has been completed in a specified durations. Second, third is the permit issuing authority shall not issue a permit unless the switches have been withdrawn. अगर permit issuing authorities आपको अगर permit issue कर रही है, तो that should be sure that the switches have been withdrawn or completely isolated. Both sides such as links, fuses, open main apparatus, जितना भी fuse है वो open होना चाहिए, apparatus discharge होना चाहिए, earth होना चाहिए. Okay, so that are the possible things you should know that permit issuing authorities कि before आपको permission देने के पहले आपको वो verify करें. Second, dangerous notice plates are attached in the conspicuous places. और जहाँ पे आपका work हो रहा है, that has been noticed or dangerous notice plates are assembled assigned on that place, so that the people that has not aware about them, you should that should be aware that through that apparatus and control points under the permit to work on that. So that is that an entry might be logbook. Suppose that some of the person are entering on that particular areas, then you should entering in the logbook and log sheet the affected the main and apparatus and the permit have been made on the date on the account shall be again the alive until the return by a person in charge. Okay. The fourth is the person in charge before allowing any workman to commence work on their mains and apparatus shall take the following precautions has been taken. First is that explain the nature of work and the precaution taken by the permitting using authorities to ensure the safety of particular workman. Second is the satisfy himself that the switches controlling and the mains and apparatus have been isolated or discharged properly earth where the possible and tested with the discharge rod and that can danger notice plates have been placed at the contiguous places. Fourth is that warn the particular workman and public the danger that exists in the vicinity of the area particular covered by the permit. Okay. The last is the where the work has been carried on the live or low or medium voltages mains or the apparatus, the following additional instructions shall be completed with that particular that no work shall be carried out by any person unless he has adequately protected from his risk of electrical shocks. By use of rubber gloves आप use करिए, other equipments use करिए for that particular purposes. Okay. Next is that Indian Electricity Act के according जब person working on the live mains में आपका काम कर रहा है and the second person will be preferably capable rendering first aid and artificial respiration. Okay. अगर कभी भी आपका particular live mains में कोई person वर्क कर रहा है और who is always आपके साथ एक पर्सन असाइंड होगा एंड द सेकंड पर्सन हु हैज बी परफेक्टली कैपेबल होना चाहिए कि आपको वो फर्स्ट एड और आर्टिफिशियली रिस्पायरेशन सिस्टम्स आपको प्रोवाइड कर पाए. ओके, सो वन पर्सन हैज बीन असाइंड फॉर दैट.
Okay, when a man ascends a pole where is the line is live, he shall make use of safety belt. अगर आपको वर्क करना है पार्टिकुलर लाइव मेंस में लाइन में, तो सेफ्टी बेल्ट यूज करिए, रबर ग्लोव्स यूज करना होगा आपको फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशंस. द नेक्स्ट इज द पर्सन इन चार्ज shall examine the safety equipments before use the workman to ensure that the sound conditions and also it is the being properly used. तो पर्सन इन चार्ज एग्जामिन करेंगे कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो पर्टिकुलर सही है या नहीं है, वो अच्छे कंडीशंस पे है या नहीं है, प्रॉपरली यूज्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. So that is the work of that person in charge of that. And next is the on the completion of the work, you should know that the remove all earthing devices, main apparatus, and fit in the all the respects of the charging, and withdraw all the workmen and warn them no longer safe to touch or the approach the mains and the apparatus of therefore after return of the key. Okay, so after completion द जो मेन इंचार्ज है वो आपका अर्थिंग रिमूव करेंगे, सारा apparatus जो है वो फिट करेंगे. आफ्टर दैट यू कैन जो भी आपके कीज हैं और परमिशिंग अथॉरिटीज को आपको हैंड ओवर्स करना होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट ऑल द एक्सीडेंट्स आर बी इमीडिएटली अटेंडेड. जितना भी अगर एक्सीडेंट्स हैपेंस हो रहा है ड्यू टू दैट सिचुएशंस, आपको तुरंत उसको रिपोर्ट करना है प्रॉपर अथॉरिटीज को. और अगर सीरियस एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, अगर लाइफ की बात है, देन यू द पर्सन इन चार्ज जो है सर इमीडिएटली गेट ए डॉक्टर ऑन ए साइट, आपको बुलाना होगा एंड रिमूव द विक्टिम बीइंग सर्टिफाइड द डेड बाय आवर डॉक्टर. ओके, सो द डॉक्टर सर्टिफाइड करेंगे कि आपका वो जो पर्सन जो है वो आपका डेड है या लाइव है, वो डिसाइड करेंगे एट दैट साइट. ओके, सो द बॉडी शुड नॉट रिमूव विदाउट द परमिशन ऑफ द पुलिस. सो ऑन दैट टाइम आपको बॉडी रिमूव नहीं करना है without the permission of that police. And the next is that this instruction shall be read out, they explain the workmen in the language they understand, copies shall be pasted and various notice boards, and ignorance of the instructions shall not be accepted and as an excuse for non-compliance with them. Okay, so this is the act and the statutory regulations. And the next is the factors on which severity of shocks depends. क्या क्या factors हो सकते हैं जिसपे shocks depends होते हैं. तो that is the human body depends on the mainly factor that is voltage of the system and current passing through the body. Second is that आपका जो depends होगा, that are the important part, the body are involved on that. So that period for that with the contact between the live parts and organ remains. Okay, also depends upon the supply system whether it is AC or DC, क्या है उस पे depends करता है. Second is the it depends on the resistance of the body. So the current passing through the body depends upon the system voltage and voltage resistance. So body resistance mainly consists the skin resistance. Okay, so that values between the 1 lakh to 5 lakh ohms when it is dry, but it will decrease the area of contact and contact pressures. It also reduces when the skin is wet and may have body resistance of that order of 5,000 ohms and less under such conditions. Okay, and also that particular case that it cannot be low voltages not result for the fatal accidents. Okay, and the voltage of 110 volt used in USA, and that results many fatal accidents annually in bathrooms or HDC. Okay, so in the some cases also notice that a person coming the direct contact with 3.3 or 6.6 and 11 kV lines are escaped dead. Okay. Now we have discussed the effect of currents on human system. What are the effects has been in the human current? So the current in milliampere has been defined 1 to 8, 8 to 15, 15 to 20, 20 to 50, 50 to 100, and 200 to above. So that are the particular currents has been in the milliampere, and the effect of that, suppose is that in the 1 to 8 it does not cause any pain but perceptible in that particular, but 8 to 15 it is a painful shock without loss of muscular control, but 15 to 20 it is painful but muscular control is adjacent muscular loss. Okay, but 20 to 50 it is severe muscular contraction, breathing comes become difficult, and 50 to 100 it may be ventricular fibrillation, may result in instant death. But above 200 or 200 maybe severe burns, muscular contraction, so severe chest muscular clamp down, hurt and stop it. This is the prevents in the ventricular fibrillations. So this is the effects of current on human bodies. Then the next is the very important, the do and don'ts. What you do and what you don'ts, and the regarding the safety in domestic electrical appliances as well the substations and power stations operators. Okay, so do's means व्हाट यू हैव टू वर्क, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है. तो कभी भी आपको पर्टिकुलर जो वर्क है एज बिन डिफाइंड एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स दैट इज 5216 एंड 1969,
आपको डिफाइन किया गया है कोई भी मेन वर्किंग अदर वार्निंग बोर्ड्स और मेन स्विच बिफोर कमेंसिंग वर्क। अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो वार्निंग बोर्ड लगा करके तब वर्क करना है। सेकंड, आपको क्या नहीं करना है, तो आपको कोई भी स्विच को क्लोज नहीं करना है अनलेस विद द फैमिलियर विद द सर्किट। आपको नहीं पता है तब तक मत करिए। एंड द कंट्रोल्स नो द रीजन फॉर इट्स बीइंग ऑपरेटेड ओपन और नॉट, आपको पता होना चाहिए क्यों ओपन है क्यों क्लोज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज द व्हाट यू डू। So before working any circuit or any apparatus, the controlling switches are opened or locked or the fuse holder should be withdrawn। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें की गई है नहीं। क्या नहीं करना है, डू नॉट मीन्स डू नॉट टच और tampered with any electrical gear or conductors unless you have made sure that कि आपका डेड और द अर्थ है या नहीं। ठीक है। थर्ड इज दैट ऑलवेज ट्रीट सर्किट, जो आपको जितना भी है कि आपको मान के चलना है कि सारा सर्किट लाइव है। ओके, सो जितना भी सर्किट्स लाइव है तो यू हैव टू प्रूव दैट देम इट इज हैव प्रूव देम टू बी डेड, सो द इंसुलेशन ऑफ द कंडक्टर्स में बी डिफेक्टिव। सो आपको मान के चलना है कि सारा लाइव है, अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू वर्क। अगर आपको नहीं पता होगा, आपने कंडक्टर्स को छू लिया, तो दैट विल बी सिचुएशन ऑफ दैट डेड। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द डोंट्स। क्या करना है, तो लाइव सर्किट्स विदाउट द एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ पर्सन इन चार्ज एंड मेक सर्टेन ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन, you are accompanied the second person complete render first add an artificial instant। जब भी आपको लाइव वर्क पे काम करना है तो एक पर्सन आपके साथ होना चाहिए, पर्सन इंचार्ज के साथ, ताकि अगर आपको कुछ भी होता है तो एट दैट सिचुएशन उसको जो सेकंड पर्सन है उन्हें फर्स्ट एड और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन सिस्टम्स पता होना चाहिए, ताकि आपको वो दे पाए एट दैट सिचुएशंस। ओके, the next is the fourth is the cultivate the habit of turning your face away from the arc। अगर आर्क जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, तो आपके फेस को उससे दूर रखिए। ओके, डोंट डू नॉट क्या करना है, आपको डिस्कनेक्ट करना होगा अर्थिंग कनेक्शंस को, रेंडर्स इनइफेक्टिव द सेफ्टी गैजेट्स एंड इंस्टॉलेशंस एंड मेन apparatus। ओके, एंड द फिफ्थ इज दैट what the guard against arcs, अगर guard against arcs as well as high voltages, remember that burns from arcs may be very severe। okay, तो अगर उस समय आपको पर्टिकुलर क्या होगा, अगर आर्क्स हो रहा है और हाई वोल्टेजेस होता है तो वो बर्न करेगा, आर्क्स फ्रॉम में वेरी सीवियर हो सकता है। और नहीं करना है क्या, डू नॉट टेम्पर्ड विद द मीटर बोर्ड्स। आपको नहीं करना है, मीटर बोर्ड को टेम्पर्ड नहीं करना है, कटआउट्स नहीं करना है, दैट आर द जब तक आपको अथॉरिटीज से आपको अलाउ नहीं किया जाए। नेक्स्ट, सी दैट ऑल स्प्लाइसेस एंड कनेक्शन आर सिक्योरली मेड। आपका होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डू नॉट एक्सपोज योर आईज टू एन इलेक्ट्रिक आर्क। आपके आर्क के सामने आपको आईज नहीं को ओपन करना है। ठीक है, एंड पेन दैट विल बी द पेनफुल इंजरी में रिजल्ट विद द शॉर्ट एक्सपोजर में हो सकता है। नेक्स्ट इज द यूज एक्सट्रीम केयर व्हेन द ब्रेकिंग एन इंडक्टिव सर्किट, दैट विल बी डेंजरसली हाई वोल्टेज likely results। एंड डू नॉट close open a switch fuse slowly hesitantly to it quickly and positively। and the next is the thoroughly discharge to earth all the cables before working on the course। and do not क्या करना है, turn your face and the that will be group of the switch or the fuse। ठीक है, वो आपको अवॉइड करना है कि जिस साइड में आपका फ्यूज है, स्विच है, उसमें उससे अवे और दूर है। ओके, दैट इज द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट we have to provide use of the overalls and dungarees and jumpers। जो आप कपड़े पहनते हैं वो फुल स्लीव्स नहीं होना चाहिए, ताकि अगर वो आप वर्क कर रहे हैं तो उस पर टच नहीं हो। लाइव कंडक्टर्स में आप पार्टिकुलर वर्किंग और लाइव कंडक्टर में हो रहे हैं तो डू नॉट रोल अप द स्लीव्स, है ना, आपको रोल नहीं करना है, क्योंकि एज द ड्राई क्लोथ गिव द सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉक्स। नेक्स्ट, डू नॉट वियर द शूज विद द नेल्ड सोल्स। ओके, जो आप वियर कर रहे हैं वो विथ नेल्ड सोल्स होना चाहिए। एंड शूज शुड हैव दी सीवन सोल्स और द प्रेफरली रबर सोल्स होना चाहिए। आपका डू नॉट वियर द सस्पेंडर्स एंड आर्म बैंड्स। आपको बैंड्स नहीं पहनना है, आर्म्स नहीं पहनना है, मेटल बकल्स नहीं पहनना है, मेटल पार्ट्स नहीं पहनना है, दैट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस। ओके, मेटल की चेन्स नहीं होना चाहिए, मेटल कीपर्स नहीं होना चाहिए। वाइल वेल्डिंग आप कर रहे हैं तो वियर आपको गोगल्स पहनना है, सेफ्टी ग्लासेस पहनना है जब वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। ट्रीट एवरीथिंग, आपको एज ए लाइव प्रूफ करना है कि सभी चीजें आपका लाइव है, उसको अकॉर्डिंग आपको सभी चीजों को मार्क अप टू मार्क करते हुए चेक करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू एक्ट। सो थिंक बिफोर यू एक्ट मीन्स यू शुड मेक यू श्योर दैट यू आर राइट। आपका जो भी कर रहे हैं वो सही है, वो आपको सोच करके करना है। नेवर स्पीक एनी पर्सन एंड वर्किंग अपॉन लाइव मीन्स आप उसको नहीं बोलना है ज्यादा। ठीक है, डेंजरस वोल्टेजेस,
All the voltages are dangerous, as you know. It's all born in the mind, and even low the voltage shock may be fatal. Okay, dangerous areas. So the when the working in the areas which contain live mains, apparatus, fixed dangerous notice plates, barriers, rails, other guardings or arrangements for the working area, do not store materials within the high voltage enclosure or low voltage areas. So that is the dangerous area, जहाँ पे आपको particular क्या है, notice plates आपको दिखाना होगा या फिर barriers लगाना होगा. जैसे आप देखते हैं रेल्स में क्या होता है, particular barriers लगा होता है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर जहाँ पे आपको डेंजरस एरिया है वहां पे आपको सेफ्टीज रखना होगा, वार्निंग बोर्ड्स लगाना होगा. सो दैट आर दैट पर्टिकुलर केस विल बी हैपन. देन विजिटर एंड अनऑथराइज्ड पर्संस, जहाँ पर आपका पर्टिकुलर डायमेंस में वर्क हो रहा है तो विजिट और अनऑथराइज्ड पर्सन को अलाउड नहीं किया जाए. देन वर्किंग ऑफ डैम्प सिचुएशंस, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हम लोगों को कंसीडर करना है जब आपका डैम्प एरिया हो. ऑल्सो टोंग और क्लिप एमीटर्स को आपको यूज करना है ताकि आप जो हाई वोल्टेज जो आ रहा है पर्टिकुलर नॉट बी यूज. क्लिप एमीटर जो है वो पर्टिकुलर क्या होता है, नहीं देता, शुड नॉट यूज्ड इन द हाई वोल्टेज और कंडक्टर्स. ओके, तो उस केस में आपको उसको यूज नहीं करना है कि टिंग क्लिप ऑन मीटर आप यूज कर लिए हाई वोल्टेज में, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. वो आपका बर्न आपको वो डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगा. द नेक्स्ट, वार्निंग ऑफ द पब्लिक when the either the accidentally otherwise live means an operator constitutes a danger to a persons. Okay, and then portable electrical apparatus आपके पास होना चाहिए ताकि आप आराम से इजिली कहीं भी आप जा सके, such as the tested आपका जो रेगुलरली एग्जामिन कर पाए. ठीक है, ये आपका सेफ्टीज है. So next we have in the next lecture, I hope you have learned all the things. In the next lecture we have discussed about that unit 1. The rest part is that the causes of fire due to electrical reasons and what are the protection against and the transformer protections. So these are we have discussed in the next lectures. So I hope that you have learned all the things. Thank you very much, and thank you once again.